Question number 7. A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeters and radius is 60 centimeters. So solid में कोन है which is standing on a hemisphere. तो हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन खड़ा है. हेमिस्फेयर का भी रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर. तो दोनों हेमिस्फेयर और कोन का रेडियस सेम है. Is placed upright in a right circular cylinder full of water. Okay. सो हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है. तो ऐसा एक सॉलिड है विच इज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर मैंने प्लेस किया है सच दैट इट टचेस द बॉटम, सच दैट ये जो अंदर हमारा सॉलिड है ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है. ओके. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर्स है और उसका हाइट 180 सेंटीमीटर्स है. ओके. तो रेडियस सबका सेम है. सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. सो हमारे पास एक हेमिस्फेयर है. सो से दिस इज द हेमिस्फेयर. इसके ऊपर एक कोन है. सो से दिस इज द कोन एंड ये जो है पूरा एक सिलेंडर के अंदर प्लेस्ड है एंड से दिस इज माय सिलेंडर. ओके. दिस इज नॉट द बेस्ट ड्राइंग बट यू गेट द आइडिया. सो रेडियस हमें गिवन है, हेमिस्फेयर का 60 है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड कोन का भी 60 है. तो रेडियस सबका सेम है. अब राइट सर्कुलर कोन का हाइट, तो यहां से लेकर यहां तक कोन का हाइट इज 120 सेंटीमीटर्स. ओके. और क्या गिवन है हमें? पूरा सिलेंडर का हाइट भी गिवन है मुझे. इट इज 180 centimeters. So basically, if we add 120, what is this length here? This is nothing but the radius. This is 60. So 120 plus 60 मैंने किया तो it becomes 180. So cylinder की height is equal to the height of these two toys. These two solids, whatever you can say. Okay. तो अब हमें निकालना है कि जब मैंने ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर डाला तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ. तो ओके, हमें पता है कि भाई अगर मैं इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डालूंगी तो जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उसका इक्वल ही वाटर डिस्प्लेस होगा. राइट. तो अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कितना पानी बचा होगा भाई? कितना पानी बचा होगा? ये हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है. राइट. उसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड माइनस कर दें. भाई पूरे सिलेंडर में से पूरा ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो मेरे पास जो रिमेनिंग वाटर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा. राइट. चलो लेट्स सी. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. राइट. माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. अब देखो सॉलिड जो है कोई एक शेप तो है नहीं. सॉलिड कैसे बना है? वो बना है एक कोन और हेमिस्फेयर को ज्वाइन करके. तो इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. यही होगा. राइट. तो दिस इज इक्वल टू pi. Let me substitute the value. What is the radius for the cylinder? It is 60 square times h. What is the height of the whole cylinder? It is 180. Okay. Minus volume of cone. Volume of cone क्या होता है? It is 1 over 3 pi r. r क्या है? 60. 60 square times h. Cone का height is 120 plus volume of hemisphere. Hemisphere का volume is, it is 2 by 3 pi r. What is r? 60 cube. यही है. This is equal to what? pi, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, 60 square times 180
माइनस यहाँ पर ये 3 है एंड यहाँ पर ये 120 है, सो 3 एंड 120 दे गेट कैंसल्ड, ये 40 हो गया. सो आई गेट पाई टाइम्स 60 स्क्वायर टाइम्स 40. यहाँ पर आई हैव 2/3 पाई 60 क्यूब. सो 60 क्यूब को मैं 60 स्क्वायर टाइम्स 60 लिख सकती हूँ, एक ही बात है भाई. एक स्क्वायर अलग कर दिया, एक 60 अलग कर दिया. क्यों किया? सो दैट आई कैन कैंसिल दिस आउट. सो ये 3 और ये 60 को मैंने कैंसिल आउट किया. सो आई गेट दिस इज 20, राइट? सो आई कैन राइट इट एज पाई टाइम्स 60 स्क्वायर. ये ये तो है ही है. एंड आई गेट 2 टाइम्स 20, इसको मैं लिख देती हूँ इंटू 40. यही है. Okay, so this is pi 60 square 40. This is also pi 60 square 40. So this becomes pi 60 square times 180 minus this becomes 2 times of pi 60 square 40, right? दो बार है. Okay, now what do I have? I can take pi common and then I can take 60 square common, दोनों में से. And then what else can I take common? Pi and 60 square. Let's just take these two common. What am I left with? I'm left with 180 here minus I'm left with 2 times 40, right? So this is pi 60 square times 180 minus 80, which is what? 100. Okay. Now, pi ko we'll write okay. So now pi can be written as 22 over 7 times 60 times 60 times 100, right? Yeah. So this is nothing but 22 times 6 is 36 and kitne zeros hai? 1 2 3 4 4 zeros. 22 times 36 over 7. And this is what I have. So now when you multiply 22, when you do the calculation, this comes out to be 1131428.57 centimeter cube. And that's your answer. So approximately, so that is the volume of water remaining in the cylinder. Okay. So now let's move on to the last question of this exercise. A spherical glass vessel has a cylindrical neck of 8 centimeters. A spherical glass has a cylindrical neck 8 centimeters long and 2 centimeters in diameter. Okay, हमारे पास एक spherical glass है, so it's in the shape of a sphere. And इसका cylindrical neck है, so this is a cylinder. Okay, this is a cylinder like this. And इस neck का height हमें given है, it is 8 centimeters long and 2 centimeters in diameter. So what is the radius? The radius is 1 centimeters, right? And the diameter of the spherical part, ये spherical part का diameter given है 8.5. So what is the radius? So the radius is 8.5 by 2 centimeters. ये हमें given है. By measuring the amount of water it holds, a child finds out the volume to be 345 centimeters cube. So
इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ सकता है, तो एक चाइल्ड ने कैलकुलेट किया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है. तो वी हैव टू चेक whether or not she is correct. Taking the above as the inside measurements and use, again, this is pi. Use pi 3.14. ओके, सो बेसिकली हमें इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है और फिर देखना है कि वेदर इट कम्स आउट टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब और नॉट. सो अगेन, वॉल्यूम ऑफ द फिगर, ये जो फिगर बना है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? इट इज मेड अप out of two shapes, so it will be equal to what? Volume of the spherical part plus volume of the cylinder. यही होगा. So now volume of the sphere का volume क्या होता है? It is 4/3 pi r cube, and what is r? It is 8.5. So it's 8.5 by 2. 8.5 by 2 का cube. यही है. Plus volume of the cylinder is pi r square. R is 1. 1 का square times h is 8. Right? So this becomes 4/3 pi times 8.5 by 2 ka whole cube plus this is nothing but 8 pi. यही है. Okay, so what I'll do is I'll take out pi, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ. अंदर मेरे पास क्या बच रहा है? 4/3 times this is 8.5 by 2 times 8.5 by 2 times 8.5 by 2 plus यहाँ पर I have 8. Okay, so this is 2 times 2 is 4 और यहाँ पर ये 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाता है. Right? Okay, so what am I left with? I'm left with pi times 8.5 times 8.5 times 8.5 divided by 6 plus 8. Okay. So this, when you solve this part, 8.5 times 8.5 times 8.5 divided by 6, this comes out to be approximately 102.354. Plus we have 8. And then pi को उसने बोला है we have to use pi as 3.14 times. इनको हमने add किया तो we get approximately 110.354. And then you multiply the two, you get 346.51 centimeter cube. So this is the volume of water in the vessel. But the child said the volume of water is 345 centimeter cube. Are the two equal? No, they're not equal. So therefore, the child is not correct. She got an approximate answer, but she did not get the exact answer. So the volume that she calculated is not correct. Are we good? Perfect. So with this, we finish up our exercise 12.2. Thank you for watching. Please do let us know in the comments what is the next topic that you want to see and if there's any improvements you would like to see. Thank you, everyone, and I'll see you soon.